नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल चैनल में। दोस्तों ये मेरे सामने ही यहाँ पर पैंटम का प्रिंटर पैंटम 7102 DW मॉडल का प्रिंटर है। ठीक है, तो इस प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ और इसका प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पर पावर को ऑन कर देता हूँ। पावर को ऑन कर दिया। इस तरह से यहाँ पर साउंड दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मशीन हमारा रेडी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर साउंड इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पर कॉपी बटन को दबाता हमें क्या करता है। ठीक है, प्रिंटेड पेपर को भी डाल दूँगा और पेपर को खींचता है कि नहीं खींचता है और क्या सिग्नल देता है। ठीक है, कॉपी कर दिया। और देखिए पेपर भी खींच रहा है, थोड़ी थोड़ी यहाँ प्रिंट भी यहाँ पर अच्छी तरह से दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साउंड इस तरह का दे रहा है। तो यहाँ पर इसका समस्या क्या होता है, इसका प्रॉब्लम क्या है, और उसको हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट में। और प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में पावर पॉप करता हूँ और यहाँ पे फटाफट यहाँ पर करता हूँ इसका इशू क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है फाइंड आउट करता हूँ और यहाँ पर सोल्यूशन आपको निकाल के देना। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए मैं साइड वाला कवर दोनों को दिए और यहाँ पे हम ट्राई करिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, मैं पावर बोल रहा हूँ, यहाँ पर तरफ यहाँ साउंड देना है, कहाँ से देना है उसको देखेंगे। दे रहा है, ये देखिए हमारा साउंड यहाँ पे, ये हमारा साउंड दे रहा है यहाँ पे फ्यूजर इनमें से दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड आउट दे रहा है, ये देखिए इसको इस तरह से कर दिया था और यहाँ से हमारा साउंड दे रहा है। ठीक है, तो हम फ्यूजर इनट को निकालेंगे फर्स्ट में, उसके बाद यहाँ पर क्या है हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों फिर से इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर राइटिंग सेशन में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको फिर से मैं एक बार निकालता हूँ और उसका पूरी सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है,
ठीक है, हमारा ये पूरा सेट चेंज करने के बाद तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम इस रोलर को निकाल दिया, हमारा प्रॉब्लम यहीं पे है। ठीक है, हम यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम फाइनल हो चुका है इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा ये रोलर बिल्कुल टूट चुका है। देखिए इस तरह से टूट चुका है, इसी की वजह से हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसे टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस रोलर को वजह से, इस रोलर का वजह से हमारा ये प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो ये टूटा था, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा साउंड दे रहा था। ठीक है, तो इस ये मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर पूरी सेट में यहाँ पर मैं डालूंगा। ठीक है, फ्यूजर यूनिट का पूरा सेट यहाँ पे है मेरे पास है। ये देखिए ये न्यू है, तो ये मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, फटाफट से रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम था वो मैं आपको दिखा दिया। इसी की वजह से यहाँ पर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा साउंड दे रहा था। ठीक है, प्रिंट कर रहा था, रेडी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा साउंड दे रहा था। ठीक है, तो इसी की वजह से था। तो वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी यहाँ पर यूनिट मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
फटाफट से इसको इस तरह से लगाता हूँ, इसको साइड करता हूँ अभी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैं यहाँ पर लगाता हूँ फटाफट से, ठीक है। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पर साइड वाला कवर था सब कुछ मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स स्पेयर नहीं होने के बाद यहाँ पर मैंने पूरी यहाँ पर सेट यहाँ पर चेंज कर दिया।
फ्यूचर यूनिट ही मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, पावर केबल कनेक्ट करता हूँ, पावर को लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। पावर ऑन कर दिया, ये देखिए हमारा प्रिंटर यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या दिखाता है हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर करगात का साउंड आ रहा था वो साउंड यहाँ पर नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो भी था वो शट आउट हो चुका है, ठीक है। और इस तरह का यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर टूट चुका था, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, ठीक है। तो ये भी है, इसको मैंने न्यू डाल दिया यहाँ पर, फिर ही न्यू डाला, उसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे। जितने भी हमारा व्यूअर्स है सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ठीक है। तो हमारे चैनल में यहाँ पर जितने भी प्रिंटर से रिलेटेड यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को जो लाइक जरूर करें। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरह का यहाँ पर प्रिंट मिल चुका है हमारा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम था यहाँ पर शॉर्ट आउट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर फिट यहाँ पर दे चुका है उससे, ठीक है। तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो हम फिर सुनेंगे। जितने भी हमारा